So what are called spherical mirrors? दी प्रकार spherical mirrors अच्छी. One is concave mirror and another mirror is called as convex mirror. Okay, and the diagram is just below. Concave mirror केमती देखिए पाई एवं convex mirror केमती देखिए पाई diagram is shown below. एबे आमे ये जो रेड कलर लाइन्स आरो मार्क सब जो दिया है लेट अस नॉट कंसीडर दिस वन. प्रथमे आमे बुझिबा स्फेरिकल मिरर कोन पई याकू कहउछे ताकू आमे कहउतले कोन फ्लैट मिरर. आमे लास्ट क्लास रे जो सब डिस्कशन करथिले दोज आर कॉल्ड फ्लैट मिरर्स. आज जेटा करबा दे आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स बोली आमे कोन पई कहबा प्रथमे सेटा बुझिबा. देखो गोटे स्फीयर एटा गोटे कोन एटा गोटे स्फीयर ताकू जदी आमे गोटे आर्क नहीं जिबा गोटे छोटो आर्क ए ब्लू कलर लाइन किंबा ऑरेंज कलर लाइन देखिबा. सो गोटे छोटो पोर्शन टे जदी गोटे स्फीयर रो हमें काटी दबा ताले सेटा हे गेला कोन गोटे स्फेरिकल सरफेस बोली हमें कहि परिबा. ओके, स्फेरिकल आर्क किंबा स्फेरिकल सरफेस. शुभम हेलो. सो सेई भलिया हमें जदी तार एमती जो हमें दीटा जो मिरर नैचे कॉनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर जो मिरर रो इंटरनल सरफेस जे ए जो इनसाइड सरफेस टा जोटा ब्लैक कलर लाइंस ब्लैक कलर रो गोटे लाइन अछि जो मिरर रो ए जो इंटर माने इनसाइड सरफेस टा होची कोन ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो मिरर रो इनसाइड सरफेस टा होची रिफ्लेक्टिंग सरफेस ताको हमें कहबा कोन ना कॉनकेव मिरर. आ बाकी ए जो पोर्शन टा आउटर सरफेस टा सेही सरफेस टा को कहंती सिल्वर्ड सरफेस. सिल्वर्ड सरफेस बोली कहंती. ओके, सो किंबा ओपेक सरफेस बोली कहंती. आ इंटरनल सरफेस जोटा की जोठी लाइट पडिले रिफ्लेक्ट हबो ताको हमें कहबा कोन सेही भलिया मिरर जहार की सेही भलिया स्फेरिकल मिरर जहार की इंटरनल पार्ट टा होची तमरो इंटरनल सरफेस टा होची रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेटा को हमें कहबा कॉनकेव मिरर. जो मिरर जार की आउटर मोस्ट सरफेस माने आउटर पार्ट टा ओके बेंडिंग टा हमें बुझिबा कथा. सो आउटर पार्ट टा होची रिफ्लेक्टिंग ए ब्लैक कलर लाइन एटा कोन एटा होची रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो एई भलिया मिरर को हमें कहबा कोन ना कन्वेक्स मिरर बोली कहबा. ओके, आ प्रथम कथा हमें कोन पई एटा को स्फेरिकल मिरर बोली कहूचे कोन पई ना एटा गोटे जदी हमें एठी सेंटर रे गोटे सपोज एठी गोटे राउंडर रखी कि गोटे स्फीयर टे ड्रा करबा किंबा एई भलिया गोटे स्फेरिकल सरफेस अछि. सो हमें एठी गोटे सेंटर रहिबो तार. सो हमें गोटे राउंडर रे जदी राउंड करबा ये कोन हबो गोटे स्फीयर गोटे फॉर्मेशन हबो. आ जो मिरर रो इंटरनल पोर्शन टा होची रिफ्लेक्टिव सरफेस सेटा को हमें कोन कहूचे कॉनकेव मिरर. ए डायग्राम एवं ए डायग्राम रे सेम जिंस किंतु ओरिएंटेशन जस्ट चेंज हे जाईची. एठी सेम जिंस जस्ट तार ओरिएंटेशन चेंज हे जाईची. एटा होची कोन कॉनकेव मिरर. अगेन एठी कोन आउटर पोर्शन इज रिफ्लेक्टिव सरफेस लिखा आईची. सो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर बोली हमें ताको कहबा. एटा होची प्रथम बेसिक पॉइंट. ओके, सो इंटरनल सरफेस टा जहार रिफ्लेक्टिंग ताको कहबा कॉनकेव एंड आउटर सरफेस टा जहार रिफ्लेक्टिंग ताको कहबा कन्वेक्स. सेकंड पॉइंट जोठी ए जो एठी जेमती मु गोटे देखैली एटा होची एटा कोन एटा होची सेंटर ऑफ कर्वेचर. ए पॉइंट रे जदी हमें ए जगह रे गोटे राउंडर पके ड्रा करबा तो आर सेंटर ए जो स्फेरिकल सरफेस रो सेंटर टा जोठी हबो. सो सेटा को हमें कहबा कोन ना सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर तापर देखिबा सेंटर ऑफ कर्वेचर रु ए जो पॉइंट टा माने मिरर रो मिडिल पॉइंट जदी हमें देखिबा सो मिरर रो मिडिल पॉइंट को जनरली कहा जाए कोन ना पोल बोली कहा जाए. पोल बोली कहा जाए. एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर रु ए जो मिडिल पॉइंट जो डिस्टेंस टा एटा सपोज एटा होची मिडिल पॉइंट रो लाइन टा. ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर रु पोल रो जो डिस्टेंस ताको हमें कहबा कोन रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर जेमती ए स्फीयर रे हमें देखुचे एटा कोन ना एटा होची सेंटर ऑफ कर्वेचर एवं एतिकी जो डिस्टेंस हमें जेमती रेडियस बोली को गोटे स्फीयर रो सेंटर रु तार पेरिफेरी तार डिस्टेंस टा केते हमें को
ना रेडियस बोली कहू सो मिरर केस रे ताकू कुआ जीवो कोन रेडियस ऑफ कर्वेचर बोली कुआ ओके सो सेंटर ऑफ कर्वेचर रु पोल भीतर रो जो हाफ डिस्टेंस ता माने half into r where r stands for radius of curvature that is equal to कौन f सेटा कौन f टा कौन फोकल लेंथ बोली हमें कहू ऑप्टिक्स रे फोकल लेंथ रो अर्थ कौन सेंटर ऑफ कर्वेचर रो हाफ वे डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ आउ से पॉइंट टा को कौन कुआ जाए ना फोकस बोली कुआ जाए f दैट इज कॉल्ड फोकस ओके सो एगुड़ा केते गोटे बेसिक जिनस आमको मन रखा पड़ो तापर गोटे ऑब्जेक्ट मिरर सामने जदि ठिया ताले ऑब्जेक्ट आउ पोल भितर जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आउ मिरर किंबा पोल भितर जो डिस्टेंस सेटा को हमें कौन कहबा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल u सिंपली u हमें रिप्रेजेंट कर परिबा इमेज रु मिरर रो जो डिस्टेंस सो ताको हमें कहबा कोन इमेज डिस्टेंस किंबा ताको हमें कहबा v ओके सो ऑब्जेक्ट रु मिरर रो जो डिस्टेंस ताको कहबा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एवं इमेज रु जो डिस्टेंस ता जोटा कहबा सेटा होची तमरो इमेज डिस्टेंस ये साई r is called radius of curvature साई प्रसाद पंडा हियर r is called radius of curvature तमे बोधे टिके लेट रे जॉइन करलो सेतमे बुझी पारुनो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रु जो डिस्टेंस ता मिरर रो पोल को एटा होची मिरर रो पोल पॉइंट मिडिल पॉइंट जदि हमें कहबा दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर मु कोन बुझेइली गोटे स्फीयर रो सेंटर इमेजिन करो ओके सो सेटा एई पेरिफेरी रु से सेंटर टा केते आमे ताकू कहू रेडियस ऑफ द स्फीयर कहू ना नहीं सो सेई भलिया आमे ताकू एटा को कोन कहि परिबा मिरर केस रे r इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर f टा कोन फोकल पॉइंट कैपिटल f इज फोकल पॉइंट रु किंबा फोकल पॉइंट किंबा फोकस रु सेंटर रो मिरर रो सेंटर रो जो डिस्टेंस ताकू आमे कहबा कोन ना फोकल लेंथ बोली कहबा small f stands for focal length object distance kete object distance is u object distance is equal to u image distance is equal to v okay so समस्ते बुझी पाउछ so anyway आमे तापरे देखिबा कन्वेक्स मिरर कोन कॉनकेव मिरर कोन आमे बुझिले रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोटा ता ऊपरे रिप्रेजेंट करे स्फेरिकल मिरर रो को पोर्शन ता होची रिफ्लेक्टिंग ता ऊपरे निर्भर करे ए मिरर टी कन्वेक्स लेंस किबा कॉनकेव मिरर सॉरी कॉनकेव मिरर किबा कन्वेक्स मिरर बोली हम तंग कहि पे तापरे हमर ऑप्टिक्स रे गोटे फार्मूला अछि दैट इज कॉल्ड मिरर फार्मूला ए फार्मूला को हमें प्रूव मध्य करि परिबा मु परवर्ती क्लास मानकरे ए फार्मूला को प्रूव मध्य करे दी परिबी ओके बट फॉर द टाइम बीइंग हमें मिरर फार्मूला कोन बुझिबा 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f what is v image distance what is u object distance and what is f that is called focal length of the spherical mirror बुझिला दिस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला ऑप्टिक्स रे ए भलिया रिलेटेड टर्म्स बहुत आसीबो आमे जते आगु को लेंस पढिबा तो लेंस फार्मूला आसीबो सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एटा आमे मिरर फार्मूला पढुचे कहार मिरर फार्मूला प्लेन मिरर विषय रे आमे ऑलरेडी पढी सारिचे ओके सो एटा कोन ना एटा स्फेरिकल मिरर केस रे ए सब जिंसर टर्म गुडा को आसे 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f okay so this is called mirror formula where v is the image distance u is the object distance and f is the focal length of the mirror so ei concept को नै कि हमें आगु को जिबा हमें देखिबा कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर रे को भलिया इमेजेस फॉर्मेशन हुए हमें जेमति प्लेन मिरर रो इमेज रो प्रॉपर्टीज गुडा को स्टडी करथिले मु जदी क्वेश्चन पचारिबे बे समस्त को जे प्लेन मिरर रो इमेज को प्रकार रो वर्चुअल ना रियल को माने आंसर दे परिबो जल्दी जल्दी चैट रे आंसर दे परिबो
Okay, so next point को जीवा. So what are the rules you have to take into consideration while drawing a ray diagram? आमे जेतले स्पेरिकल मिरर विषय आमे पढुचे. सो जेतले रे डायग्राम माने कोन मु कहिची रे ऑप्टिक्स काई कहूचे आमे रे हिसाब रे कंसीडर करछे लाइट को. लाइट रिफ्लेक्ट हैला कि रिफ्रैक्शन हैला. रिफ्रैक्शन फॉर द टाइमिंग आमे पढी नाही एबे पर्यंत. सो लेट अस फोकस आवर डिस्कशन टू ओनली रिफ्लेक्शन. सो रिफ्लेक्ट हेइकरी तापर जेतेबेले मीट होउचंती एट ए सर्टेन पॉइंट. यस साई प्रसाद पंडा, इट इज वर्चुअल. यस शोभन महाराणा, the image formed by a plane mirror is virtual. Thank you all of you. So हमें कौन कहि परिबा जे जो या अंजलि प्रभा दत्ता, इट्स वर्चुअल, राइट. सो रूल्स टेकन इनटू कंसीडरेशन. सो आमे जेतले रे डायग्राम करूचे, सो कौन कौन रूल्स हमको कंसीडर करियो पड़िबो स्फेरिकल मिरर पढिला बेले. सो एठी गोटे मु तम मानकू एटा कोन, एटा होची इंटरनल सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग. एटा को हमें कोन कहि परिबा ना कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर बोली हमें कहि परिबा. गोटे कॉनकेव मिरर टे हमें गोटे एग्जांपल रे नेले. कौन कौन रूल्स, प्रथम रूल्स कौन कहला, when the rays parallel to the principal axis are incident upon a spherical mirror, the reflected rays intersect at the focus. देखो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस कोटा ए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस एवं एटा जोटा पोल, से जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस एंड पोल, किंबा हमें सिंपली कहि परियो द लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो ए जो प्रिंसिपल एक्सिस हमें एठी देखिले. सो व्हेन द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ए जो एठी गोटे ऑब्जेक्ट ठिया हिची, ए पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर एठी गोटे ऑब्जेक्ट ठिया हिची. सो ए ऑब्जेक्ट रु गोटे लाइट गला कोठी हिट हला स्फेरिकल मिरर रे हिट हला. तापर कोठी की आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर रे जतले बाडेला तापर कोन होबो, लाइट विल रिफ्लेक्ट. So light after reflection, where it is passing? It is passing through the focus of the spherical mirror. It is passing through the focus of the spherical mirror. This is the first rule. Always जत्ते सबु light जोटा कि principal axis रु parallel जाए, principal axis को parallel जो रे जीवो सेटा focus देकी सबु बेले pass करिवो after reflection. Second point, the focal ray reflects parallel to the principal axis. Focal ray माने कौन, जो लाइट टी फोकस देकरी पास करिवो, जो इंसिडेंट लाइट टी फोकस देकरी पास करिवो. एठी देखो ए पॉइंट रु फोकस देकरी ए लाइट टी पास कला, इंसिडेंट लाइट आसिकी कोठी हिट हला, ए पॉइंट रे हिट हला, स्फेरिकल मिरर रे हिट हला. देन तापर कोन हला, रिफ्लेक्शन हला. ओके, रिफ्लेक्शन हला परे कुआडे गला, parallel to the principal axis गला after reflection. ए दीटी पॉइंट वेरी इजी पॉइंट. कौन, प्रथमे parallel गले फोकस देकी पास कला, फोकस देकी गले parallel देकी parallel हिसाब रे पास करिवो, parallel to the principal axis. very easy to remember. Third point कौन, the center of curvature ray reflects back along its incoming path. सेंटर ऑफ कर्वेचर रे मन कर एटा होची तमरो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट. आमे जानि छे C स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर देकरी ए लाइट टी जेतेले पास करूची, सपोज तार डायरेक्शन होची एरो मार्क आमे देले एम्ति, अगेन इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग इट्स इनकमिंग पाथ. ओके, सो सेई भलिया एम्ति जदी गोटे सेंटर ऑफ रे कर्वेचर रे ए भलिया जाई थांता, ए भलिया जदी जाई थांता, so again it must reflect back along its incoming path. बुझिएला. so these are the three rules which we have to always consider while drawing a ray diagram in case of a concave mirror. तापरे convex mirror रो सेमिति आमे एठी देखि परिबा. एठी गोटे convex mirror मु नेची, एठी गोटे आमे convex mirror नेचे जहार कि आउटर मोस्ट सरफेस ता होची रिफ्लेक्टिंग सरफेस. देखो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कोपटे जीवो, इट मस्ट पास थ्रू द फोकस. एठी किंतु फोकस ता किए, इट इज ए वर्चुअल फोकस. जेमति प्लेन मिरर केस रे हमें वर्चुअल इमेज पाउथलु, हमें देखिबा आगु को
आमे जते बेले कन्वेक्स मिरर रो प्रॉपर्टीज गुडा को स्टडी करिबा विल डेफिनेटली डिस्कस इट जे केमती वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हबो कन्वेक्स मिरर केस रे सो रिफ्लेक्शन हैला ओके सो से रिफ्लेक्टेड रे टाको आमे जदी एक्सटेंड करिबा it will virtually meet at the focus of the convex mirror similarly जदि फोकल रे ए जो रे टाको आमे जदि एरो मार्क टा ए भलिया दबा let it be the incident रे एटा फोकस देकरी पास करि थांता किंतु जते मिरर हिट कला ये रिफ्लेक्ट करिवो को पटे प्रिंसिपल एक्सिस द फोकल रे will after reflection reflect parallel to the principal axis okay very easy point ए भलिया आमे देखिले ए रूल्स गुडा का ए तीनटा रूल हमको फॉलो सब बेले करियो पड़ी देन वी विल गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर किंतु ता पूर्वरु हमको केते गुडे साइन कन्वेंशंस नबाकू पड़िबो ऑप्टिक्स रे साइन कन्वेंशंस रो बहुत बड़ भूमिका रहिछि साइन कन्वेंशंस अनुसार हमर रिजल्ट ऊपर रिफ्लेक्ट करिवो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन ई सब केते गुडे जिंस हमको कंसीडर सब बेले करिया पड़िबो साइन कन्वेंशंस रो अर्थ कोन कन्वेंशन माने कोन हमर ओन कन्वीनियंस अनुसार हमको जोटा सुविधा हमर सुविधा अनुसार हमें साइन नबा पॉजिटिव साइन कि नेगेटिव साइन सो सेति पय एटा को कहबा कोन साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर एठी मु गोटे स्टार मार्क देकी गोटे पॉइंट लिखिछि कोन लिखिछि फ्रंट साइड मींस इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग साइड बैक साइड मींस बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग साइड हैला सो जदी गोटे कॉनकेव मिरर नबा कॉनकेव मिरर ए भलिया तार रिफ्लेक्टिंग सरफेस ता होची ए सरफेस सो रिफ्लेक्टिंग साइड किए हबो किबा फ्रंट साइड किए हबो ए पट साइड ता होची फ्रंट साइड कॉनकेव मिरर केस रे रिफ्लेक्टिंग साइड ता जेहेतु कि ए लेफ्ट साइड ता इंटरनल साइड ता होची रिफ्लेक्टिंग जेतले मु ओरिएंटेशन ए भलिया मिरर रो नेची एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस इज ए कॉनकेव मिरर सो रिफ्लेक्टिंग साइड टा कोटा पिला माने ए लेफ्ट साइड टा होची रिफ्लेक्टिंग साइड किबा आमे कहि परिबा दिस इज कॉल्ड फ्रंट साइड ऑफ ए मिरर बैक साइड माने जो पटे रिफ्लेक्ट करू नाही किबा जो पटे लाइट पास करू नाही सेटा को आमे कोन कहिबा दिस इज बैकवर्ड साइड ऑफ ए कॉनकेव मिरर सिमिलरली लेट अस टेक ए कन्वेक्स मिरर लाइक दिस आर अगेन रिफ्लेक्टिंग साइड टा कोटा ए पटा होची रिफ्लेक्टिंग साइड तो सिमिलरली आर फ्रंट साइड टा कोटा है जो पिला माने दिस शुड बी द फ्रंट साइड दिस शुड बी द फ्रंट साइड ओके बुझियला सो सेही अनुसार हमकु एठी केते बडे साइन कन्वेंशंस नबाकू पड़िबो इट इज इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स एटा को हमकु मन रखिया को सब बेले पड़िबो ओके सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव if the object is in front of the mirror object distance हमें कौन नहीं थिले पिला माने u बोली नहीं थिले so do किंबा u बोली हमें नहीं परिबा any symbol you can use so object distance u is positive if the object is in front of the mirror जदि ऑब्जेक्ट टी ए रिफ्लेक्टिंग साइड पटे ठिया आइछि ताले ऑब्जेक्ट u is equal to positive हमें नबा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव if the object is in back side of the mirror जदि वस्तुटी आरपट साइड रे ठिया आइछि ता माने हमें कोन कहबा से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव बोली नबा ओके सो इमेज डिस्टेंस इज अगेन पॉजिटिव इफ द इमेज इज इन फ्रंट साइड ऑफ द मिरर जदि हमर इमेज सपोज इमेज एठी क्रिएट होची कॉनकेव मिरर केस रे सो ए इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू पॉजिटिव हमें नबा एठी हमें di बदल रे v मध्ये तम माने कंसीडर कर परियो v this is u okay so image distance is positive if the image is in front side of the mirror and image distance is negative if the image is in virtual side or back side of the mirror okay ei चारटा पॉइंट हमें देखिली तापरे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टू पॉइंट्स हमें कंसीडर करिवा फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव फॉर कॉनकेव मिरर्स concave mirror pai f is equal to positive and r is equal to also positive for concave mirrors पिला माने तम माने
लाइव सेशन पर जो माने सपोज कनेक्शन रे किछि प्रॉब्लम होची किबा कोनोसी जगह रे तुम माने बुझी पारिन तमे यू कैन गो थ्रू द वीडियो दिस वीडियो विल बी अपलोडेड अगेन ओके तुम माने आ देरो नोट्स भी मध्य निजे निजे बनै परिबो ओके एंड मु सब बेले कहूची समस्त को जे जते बेले लाइव सेशन देखुचो किबा जो भी वीडियो देखुचो सब बेले चेष्टा करो जे वीडियो रो क्वालिटी तमे तमर मोबाइल सेटिंग्स रे किबा लैपटॉप किबा एनी डिजिटल गैजेट रे जो माने तम सब देखुचो सो क्वालिटी सब बेले हाईएस्ट रखो सो दैट मु जहा लिखुची तम मन को बेटर वे रे देखा जिवो okay so focal length and radius of curvature is always positive for concave mirrors and focal length and radius of curvature is always negative for convex mirror ta mane f is positive and f is negative in case of concave and convex mirrors okay tapare m what is m stands for magnification ame plane mirror ro magnification dekhitele that is a unmagnified image formation हुए magnification so m stands for magnification so magnification is positive माने image is upright माने object जो भलिया ठिया हिची image जदी सेही भलिया ठिया हबो so ताकू हमें कहबा upright image प्लेन मिरर रे मु जदी एबे क्वेश्चन करबी प्लेन मिरर रे को भलिया फॉर्मेशन हुए इमेज इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन हुए ना अपराइट इमेज फॉर्मेशन हुए समझते यू कैन राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स सो अपराइट इमेज जदी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बाहरला ताले इमेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहइबो अपराइट इमेज रहइबो एम जदी मैग्निफिकेशन जदी नेगेटिव बाहरिला ताले इमेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहइबो ना इन्वर्टेड इमेज रहइबो inverted image rahibo okay so magnification again formula kono same formula height of the object height of the image divided by height of the object that is again equal to minus of v by u minus of v by u where v stands for what image distance and u stands for object distance okay so yeah it's a erect image kimba upright image okay so Anjali it's correct answer so it is erect or upright image for a plane mirror case सब बेले इरेक्ट कोंती upright रो आ गुटे अन्य नाम होची राजेश you are also correct so upright रो आ गुटे अन्य नाम होची इरेक्ट इमेज so क्वेश्चन रे इरेक्ट भी पड़ी थाई पारे किंबा upright भी पड़ी थाई पारे so magnification of formula again kono height of the image divided by height of the object that is equal to minus v by u that is minus of image distance divided by object distance tapare ame agu jiba okay so based on these sign conventions and based on these rules ame jota padhile tinta rule padle so based on those three rules and these some sign conventions will proceed so concave mirror ro images object विभिन्न साइट रे जदी ठिया हिची ताले तार को भलिया इमेजेस फॉर्मेशन होबो these are one of the most important points which we have to remember तो आमे ताको बाय हार्ट करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही आमे जदी रूल्स जानिचे एवं मिरर फार्मूला जानिचे एवं साइन कन्वेंशंस जदी हमर मन अछि आमे एई सब जिंस मन न रखि कि भी आंसर आमे कर परिबा so when the object is placed at the center of curvature ताहले इमेज रो प्रॉपर्टीज कोन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ए एग्जांपल टी मु तमन को देखैछि बट इटी प्रॉपर्टीज गुडा का हमें स्टडी करिवा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज सेंटर ऑफ कर्वेचर रे देखो इटी ए बी इज द ऑब्जेक्ट ठिया हिछि राइट किबा बी ए तमे कहि परिबा सो अगेन प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे गला फोकस देकरी पास कला फोकस देकरी पास कला रे and it will again pass through the parallel to the principal axis so दीटा जगह रिफ्लेक्टेड रे कोठी मीट होउचंती ना पॉइंट एई जगह रे मीट होउचंती सो एठी हमर कोन फॉर्मेशन हैला ना इमेज फॉर्मेशन हैला एठी इमेज टी को प्रकार रा देखा जाउची इन्वर्टेड भलिया देखा जाउची ना नहीं ऑब्जेक्ट जो भलिया ठिया हिची इमेज ता उल्टा ठिया हला भलिया देखा जाउची सो एठी इमेज ता को हमें कोन कहबा ना इन्वर्टेड इमेज बोली कहबा ओके तापरे अनमैग्निफाइड ना मैग्निफाइड देखा होची हमकु इट इज ए अनमैग्निफाइड इमेज ऑब्जेक्ट जति की हाइट इमेज सेति की हाइट बोले हमु देखा जाउची
So it is same size as the object, and it is a real image or virtual image. So मु तुम मान को सब बेले कहि कौन, so real image और virtual image आमे केमती जानिबा, based on the sign conventions we can see whether it is a real image or virtual image. एटी कौन कहि, image distance is positive if the image is in front side of the mirror, or when the image is in the front side of the mirror किंबा reflecting side पटे जदि image ठिया आइछि, से image टाको आमे कोन कहबा, real image बोली कहूचे. एठी ए पोर्शन ता एठी कोन लिखाइछि ना real image बोली लिखाइछि. So simply we can write here this is a real image. Okay, so आमे मने करो डायग्राम मने पडुनी, हमकु डायग्राम आमे ड्रा करिया पई चाहुने, आमे समय बंचेया पई चाहुचे. So एठी हमकु कोन कहिछि, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. ता माने v सॉरी u होछि हमरो होछि कोन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू कोन होई जिवो, सेंटर ऑफ कर्वेचर रु पोल रो डिस्टेंस ता केते ना r हमें जानिचे. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर रु पोल रो डिस्टेंस ता केते ना r, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ता माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जति की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेति की. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस मिरर फॉर्मूला आमे जोटा पढी थले 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f आमे पढिचे. सो 1/v हमकु कैलकुलेट करिवार अछि. सो 1/f माइनस 1/r सिंपली आमे लिखि परिबा, u बदल रे आमे r लिखि परिबा. अगेन r ता केते पिला माने, रेडियस इज इक्वल टू केते, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू केते 2 into फोकल लेंथ, 2 into फोकल लेंथ. ओके, और इन अदर वर्ड्स फोकल लेंथ ता केते पिला माने, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2. जे कोनोसी मात्रे आमे सॉल्व करि परिबा ए इक्वेशन हला. सो सॉल्व कले आमे कोन पाइबा, सो एठी जदी 1/f जगह r/2 मु पके देबी. सो 2/r minus 1/r आमे एठी पाउचे. सो 2/r minus 1/r केते 1/r अगेन. ता माने ऑब्जेक्ट जोठी 1/v इज इक्वल टू 1/r आमे पाउचे. ता माने इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू r. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू r, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू r. सो ता माने इमेज कोठी फॉर्मेशन होबो, सेंटर ऑफ कर्वेचर रे फॉर्मेशन होबो ना नहीं. सो आमे एठु मध्ये कैलकुलेट कर परिबा मिरर फॉर्मूला रु इजीली, वेरी इजीली वी कैन कैलकुलेट दैट इमेज ता कोठी फॉर्मेशन होछि. तापरे साइन कन्वेंशन कोन कहला, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, आउ सेही जदी इट इज इन द फ्रंट साइड ऑफ द मिरर, आउ सेही भलिया पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस को आमे कोन कहू ना रियल इमेज बोली को, रियल इमेज बोली को. सो आमे सिंपली आखि बुझी कि एटा को रियल इमेज बोली लिखि दे परिबा. तापरे अगेन बेस्ड ऑन द मिरर फॉर्मूला आमे कोन कहि परिबा, एटा इन्वर्टेड ना नॉन इन्वर्टेड केमती कैलकुलेट करबा. मैग्निफिकेशन रो फॉर्मूला कोन, m इज इक्वल टू माइनस v/u. सो v जति की माइनस r/r दैट इज इक्वल टू -1. जदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव ता माने इमेज ता कोन, इमेज इज इन्वर्टेड इमेज, इमेज इज इन्वर्टेड इमेज. ओके, आमे मिरर फॉर्मूला रु मध्ये कैलकुलेट कर परिबा, एवं बेस्ड ऑन रे डायग्राम आल्सो आमे कैलकुलेट कर परिबा. इस प्रॉपर्टीज बोथ आर इंटर रिलेटेड प्रॉपर्टीज. ओके, so next point ku jiba, when the object is placed between center of curvature and focus, when the object is placed between center of curvature and focus. Okay, so एटी c अछि एंड एटी होछि f अछि. ई सब मिरर कोन ना कॉनकेव मिरर. आमे कॉनकेव मिरर रो केवल आज प्रॉपर्टीज गुडा को स्टडी करूचे. कॉनकेव मिरर रो प्रॉपर्टीज गुडा को स्टडी करिबा, इमेज रो प्रॉपर्टीज गुडा. ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर एवं फोकस मझिरे जोटी गोटे ऑब्जेक्ट अछि. सो ए बी ऑब्जेक्ट गोटे रहिला. सो गोटे पैरेलल रे गला एंड इट विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट. रूल्स हमर कहूची अगेन फोकल रे गला एवं अगेन इट विल पास थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो ए पॉइंट रे मीटिंग हैला, मीटिंग पॉइंट, दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू रेज. ओके, सो मीटिंग पॉइंट हैला परे एठी कोन होची, इमेज फॉर्मेशन होची. आमे मिरर फार्मूला रु मध्ये कैलकुलेट कर परिबा
एवं रे डायग्राम रु मध्य कैलकुलेट कर परिबो रे डायग्राम रु वेरी इजी माने मु एटा कर देछि त माने देखि कहि दे परिबो जे एटा इन्वर्टेड किबा रियल इशू देखि कहि दे परिबो किंतु हमकु एग्जाम रे केमति क्वेश्चन पचारथिबो so what are the properties of the images formed when the object is placed between center of curvature and focus of a concave mirror सेठी हमें कोन करिया पिला माने सब बेले हमें कोन पकेबा मिरर फार्मूला पकेबा एवं साइन कन्वेंशंस हमें सब बेले यूज करिबा मु जोटा साइन कन्वेंशन समस्त कहली सेटा आउथरे जाई कि ए वीडियो रे देखिबो जते बेले ए लाइव सेशन सरी जीवो दिस वीडियो विल बी अगेन अपलोडेड जो माने जदी वॉच करी ना यू कैन अगेन गो थ्रू दोस साइन कन्वेंशंस वेरी इजीली यू कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस सो एठी इमेज रा प्रॉपर्टीज समस्त लिखि परिबो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर रु बाहर इमेज फॉर्मेशन हैला प्रथम पॉइंट हैला आमे लिखिबा प्रॉपर्टीज रे कोन लिखिबा जे को जागा रे इमेज फॉर्मेशन होउची तापरे इमेज ता होउची अनमैग्निफाइड ना मैग्निफाइड रियल ना इन्वर्टेड ओके किबा इरेक्ट इमेज ना इन्वर्टेड इमेज ए सब जिंस हमकु देखियो पड़ी so here the image is obviously inverted and it is a real image and it is larger as compared to the size of the object okay तापरे हमें थर्ड पॉइंट बुझिबा when the object is placed at the focus of the concave mirror again I am saying repeatedly I am saying these are all what concave mirror because the internal surface is the reflecting surface so image is when the object is placed at the focus so it is rays parallel gala and after reflection it is passing through the focus of the mirror किंतु एठी आउ फोकल रे जिबार कोनोसी प्रकार रो प्रोविजन हे परिबो नाही सो एठी जदी फोकल रे जाई परिबोनी कोन जाई परिबो सेंटर ऑफ कर्वेचर रे टी हमें कोन करि परिबा ड्रॉ करि परिबा सो सेंटर ऑफ कर्वेचर रे ए ऑब्जेक्ट रो टिप देकरी पास कला सो एठी ई जो मीटिंग पॉइंट एठी मीट होउचंदी की एक्चुअली मीट होउ नांदी सो डेफिनेटली एट ए वेरी लार्जर डिस्टेंस दे मे मीट so आमे एठी कहबा कोन it is a highly enlarged image so highly enlarged माने एठी सपोज एठी कोठी गोटे इनफाइनाइट पॉइंट रे मीट होउचंदी so the rays are meeting at infinity ता माने image is formed at infinity and the image formed is highly enlarged image it is real image काहे की फ्रंट साइड रे अछि and it is a inverted image आमे मिरर फार्मूला के पके गिरी एई प्रॉब्लम सॉल्व कर परिबा again it is object is placed at focus ता माने u is equal to f ओके मिरर फार्मूला कौन कहला 1 by v plus 1 by f is equal to again 1 by f u जगह रे मु एठी f पकेली सो हमें एठी कौन पके परिबा सो 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by f केते 0 सो v टा केते आसीबो 1 by 0 टा को केते कुआ जाय पिला माने इंफिनिटी कुआ जाय सो इमेज इज फॉर्म्ड एट कोन इमेज डिस्टेंस केते इंफिनिटी सो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एंड इट इज वेरी लार्जर काहे कि हमें मैग्निफिकेशन अगेन पके परिबा माइनस v by u पका सो माइनस v by u पकेले माइनस v टा केते इंफिनिटी डिवाइडेड बाय u इज ए फाइनाइट क्वांटिटी सो इट इज अगेन कोन एटा गोटे इंफिनिटी आसीबो सो इट इज ए वेरी लार्जर क्वांटिटी सो इमेज इज ए enlarged image it is a real image and it is formed at infinity when the object is placed at focus of a concave mirror तापरे नेक्स्ट पॉइंट को हमें जिबा so when the object is placed between focus and pole of a mirror it होची pole मु कहिची so when the object is placed between focus and pole of a mirror को mirror ना concave mirror so ए केस रे कोन हेला अगेन फोकस आउ पोल भितरे गोटे ऑब्जेक्ट ठिया हला तापर कोन हला parallel ray गला to the principal axis and after reflection it is passing through the focal point again एठी focal ray draw करी हबनी not possible so सेठी कोन हबो ना center of curvature ray हमें एठी गोटे draw कले and it is again coming back to the same path and ए दीटा रे को जते बेले हमें वर्चुअली मीट करोचे बैक साइड ऑफ द मिरर रे तो सेठी कोन होची वेयर इज द मीटिंग पॉइंट हियर सो हियर बट एठी कोन हे जिवो पिला माने ए जो इमेज ता हमें कोन कहबा सिंस इट इज द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट द बैक साइड ऑफ द मिरर नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ द मिरर सो दिस इमेज इज कॉल्ड कोन वर्चुअल इमेज
It is a erect image or inverted image? It is a erect image. It is larger than the object or not? Yes, it is larger than the object. Magnification is greater than 1, so that is why it is larger than the object. Okay, so ei bhulia kete gude properties ame study kari pariba from the mirror formula and as well as from the ray diagram. ame jodi ray diagram mane rakhiya pai convenient houni, you can use mirror formula एवं साइन कन्वेंशन सब बेले हमको मन रखिया पड़िबो. साइन कन्वेंशंस मु तमन को आ पूर्व कहिछि. ओके, सो स्लाइड रो प्रथम वीडियो रो प्रथम स्टार्टिंग रो मु साइन कन्वेंशंस और रूल्स विषय रे डिस्कस करिछि. सो यू कैन अगेन वॉच थ्रू एंड गो थ्रू दैट साइन कन्वेंशंस. ओके, सो एटा होछि आज रो डिस्कशन. आमे जदि तम माने आउरी इंटरेस्टेड ता माने आमे कन्वेक्स मिरर मध्ये आउ डिस्कस करि परिबा. If you people are interested, you can just hit on the thumbs up button so that I will continue towards the convex mirror. What are the images formed by the convex mirror? What are the properties of the images formed by the convex mirror? Okay, so I hope all of you are doing well in this COVID-19 situation. So ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ, ସୁସ୍ଥ ଥାଅ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କର, COVID-19 protocols follow କର. Okay, so I think people are interested to watch again. So आमे कन्वेक्स मिरर विषय रे भी स्टडी करि परिबा. एवं ता पूर्वरु मु आ गोटे पॉइंट एठी छाडी देछि. कॉन्केव मिरर रो आ गोटे पॉइंट मु छाडी देछि. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, माने सेंटर ऑफ कर्वेचर रु बाहरे जदी. ओके साई, लेट अस कंटिन्यू टुवर्ड्स द कन्वेक्स मिरर आल्सो. सो ता पूर्वरु एई एग्जांपल टा मे माने देखिबा. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ता माने सेंटर ऑफ कर्वेचर रु आउरी दूर रे जदि गोटे आमे ऑब्जेक्ट को रखिले अगेन कोन हे जिवो. सो इमेज फॉर्म केमती होची देखो. सो रे पैरेलल गला टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट. एठी आमे फोकल रे मध्ये गोटे ड्रॉ कर परिबा. एठी मु सेंटर ऑफ कर्वेचर रे ड्रॉ करची. एठी गोटे फोकल रे मध्ये जदि आमे ड्रॉ करिबा ए बोलिया, इट विल अगेन पास थ्रू द parallel to the principal axis, and this meeting point of the reflected rays, they will give you the image. Okay, so here the image is inverted image, here it is a real image because it is forming on the front side or the reflecting side, and it is a diminished image. Diminished माने कौन पिला माने? Diminished माने image टा छोटो हो जाइछि. ओके, सो सेटा को हमें diminished image बोली कहबा. ओके, सो किंबा आमे ताको कहिबा नेगेटिव मैग्निफिकेशन. सॉरी, माने मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1. मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 ताको आमे कहिबा डिमिनिश्ड इमेज, छोटो होई जिबा, शॉर्ट इमेज बोली कहिबा. ओके, सो एठी इमेज फॉर्मड इज डिमिनिश्ड इमेज. एम्ति क्वेश्चंस भी आसी पारे. इन व्हिच केस ऑफ ए कॉन्केव मिरर an image formed is diminished. चारटा ऑप्शन देथिबो. when the object is placed between the focus and pole, when the object is placed at the focus, when the object is placed beyond C, when the object is placed at the center of the curvature. ए भलिया चारटा ऑप्शंस मध्ये देइ थाई पारे. सो ए सब जिंस हमको बारंबार ड्रॉ करियो पड़िबो एवं मिरर फार्मूला पके के एक्वेंटेड होबो पड़िबो. सो बोथ ऑफ द आइदर ऑफ द केसेस हमको रिमेंबर जदि हमें करिथिबा ताले एग्जाम रे हमें भलो की आंसर देइ परिबा. Okay, so now let us move to the another example of a concave mirror. Again, when the object is placed at infinity, when the object is placed at infinity, again the image is formed at corner. Image is formed at focus, but the image is highly diminished. Highly diminished. Highly diminished. बहुत ही larger distance रे जदि mirror रो आमे रखिचे गोटे स्पेरिकल मिरर रो बहुत ही लार्जर डिस्टेंस माने इनफाइनाइट डिस्टेंस रे जदि आमे ऑब्जेक्ट को रखिचे ताले इमेज फॉर्म ता कोठी हबो ना फोकस रे हबो, बट हाईली डिमिनिश्ड किबा पॉइंट साइज इमेज फॉर्मेशन हबो पिला माने. ओके, एंड इट इज रियल इमेज काहे की front side of the reflecting side किबा front side of the mirror रे formation होची, and it is also inverted image बोली हमें कहि परिबा. या पार्थ प्रीतम, you are correct.
so it is a point sized image. Okay, so highly diminished kimba point size image. Okay, so next let us continue our discussion to the uses of concave mirror. What are the uses of concave mirror? Concave mirror को पाई यूज हुए तो से विषय आम जब डिस्कसन करवा सो कौन देखिपर सो इट इज यूज्ड इन हेडलाइट. ओके, इट इज यूज्ड एज व्हीकल हेडलाइट. आम जो कार बाइक ये सब हेडलाइट रे यूज हुए कॉनकेव मिरर यूज हुए. टॉर्च रे यूज हुए, सेविंग मिरर रे यूज हुए टू गेट द मैग्निफाइड इमेज ऑफ ए फेस. जनरली कॉनकेव मिरर गुडा मैग्निफाइड इमेज फॉर्मेशन होची गोटे गोटे केस रे. ओके, सो डेंटिस्ट माने जो मिरर यूज करती क्वेश्चन आसी पारे व्हाट सॉर्ट ऑफ मिरर आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट ना कॉनकेव मिरर. कौन पाई आमे जेतबे दांत उपाड़ला बेले आमे सब बेले देखिचे गोटे छोटो मिरर गोटे ता सहित गोटे बाडी लागिथिबो. सो दे यूज सच टाइप ऑफ मिरर टू सी द इमेज ऑफ द मैग्निफाइड इमेज ऑफ द टीथ जोटा कि खाली आखि रे देखिबा पॉसिबल नुह. So concave mirrors are used in reflecting telescopes. Concave mirrors are used for construction of laser. Okay, concave mirrors are used. One of the most important uses nowadays. I mean, समझते solar is a panel, solar heater, solar light, solar panel सब जो use करते for concentrating solar sunlight to produce heat in solar furnaces. Okay, large concave mirrors are used. And concave mirrors are used as mirror landing aid system of modern aircraft carriers. Okay, so जेतबेले एयरक्राफ्ट जेतबेले उलूची साइड रे सब जो मिरर्स ए सब माने से जो रनवे रे लागि थाउची सेगुडा सब कोन आमे कहि परिबा कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बोली कहि परिबा. Okay, these are the main uses of concave mirror. So I think आमे आजिरो डिस्कशन को एठी रखिबा. In the next class or maybe in the upcoming classes I will discuss about what are the properties of the images found by convex mirror. Okay, एवं तार uses कोन आमे डिस्कशन कर परिबा. सो ता पूर्व मु तम मानन को कहबी गोटे बहुत बढ़िया गोटे माने मु तम मानन को फार्मूला बताउची जोथरे कि तम माने मने रखि परिबो ए जो इमेज रो प्रॉपर्टीज गुडा को वेरी इजीली यू कैन रिमेंबर. कोन ए भलिया गोटे टेबल बनाओ. एगुटा गोटे टेबल बने कि तुम मैंने देख ऑब्जेक्ट रो लोकेशन लिख कॉलम रे. फोकस रे अछि इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर माने सेंटर ऑफ कर्वेचर रु टिके बाहर, एंड एट इंफिनिटी एट ए वेरी वेरी लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. सो इमेज रो कोन कोन प्रॉपर्टीज आमे पाइले सेटा को जति आमे गोटे टेबल माध्यम रे लेखिबा एवं हमर पढ़ा जगह कि आमे जोठी पढुचे आमे जति सेठी ए टेबल टा प्रिंट करके आमे चिपकेबा हमर सबले मन रहिबो, हमर एग्जाम रे सबले मन रहिबो एंड वी कैन आंसर द क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली. हमको बेसी समय हमको इवन मिरर फार्मूला किबा रे डायग्राम मध्ये करियो पडिबोनी जति हमर आंसर मन थिबो. सो तार प्रॉपर्टीज माने लोकेशन कोठी फॉर्मेशन होउची, को टाइप रो माने रियल ना वर्चुअल. ओके, को टाइप रो इमेज फॉर्मेशन होची, मैग्निफिकेशन केते पॉजिटिव माने ग्रेटर देन 1 ना लेस देन 1. ओके, मैग्निफिकेशन रो साइन कोन, ओरिएंटेशन कोन, साइन पाई गले हमें ओरिएंटेशन ऑब्वियसली पाई जिबा. नेगेटिव माने इन्वर्टेड आ जदी पॉजिटिव माने इट इज अपराइट किबा इरेक्ट बोली हमें कहि परिबा. सो थैंक यू फॉर टुडेस क्लास. सो आगामी नेक्स्ट क्लास मान करे हमें डिस्कस करबा रिगार्डिंग द कॉन्वेक्स मिरर. ता पूर्व मु कहि रखिया पई चाहे जो माने सब्सक्राइब करनो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट तुम माने नेक्स्ट लाइव क्लासेस जो सब हबो तार नोटिफिकेशन तमे बहुत इजीली पाई जिवो. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेस क्लास. थैंक यू ऑल ऑफ यू.